Mohit, can any one of you tell me what is practical application of Boyle's law? No. You started searching in the books. कैमरा ऑन कर लो बेटा, सब लोग कैमरा ऑन कर लो. क्वेश्चन समझ में आ गया रॉनी? यस सर, आ गया. ओके, सो व्हाट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ? व्हाट इज, सी, बॉयल्स लॉ सेज सर दैट किसी जगह पे टेम्परेचर को कांस्टेंट करके सब प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो सर प्रेशर को वॉल्यूम बढ़ना बढ़ाते बढ़ेगा. हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है. दैट मीन्स इसका उल्टा करें, अगर हम प्रेशर को कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा. ठीक, एट सी लेवल वी नो दैट द टेम्परेचर इज लार्ज इनफ at sea level height, so pressure at sea level height is also large because of long column of atmosphere over the seesaw. At sea level the pressure on the air is very large, therefore the number of gaseous molecules per unit volume will be large, because when the pressure is large volume will be less. ठीक है, when volume will be less, number of particles of oxygen or number of particles of other gases per unit volume will be large. That means the density of air would be large, so we can easily breathe in oxygen gas at the height of sea level. Okay, but at higher altitudes in mountains the pressure of air is less. Pressure is less, temperature is also less. When the pressure is less, volume of air would be large. When the volume of air is large, then the density of air would be less. That means the density of oxygen molecules would be less. Therefore, mountaineers find a problem in breathing, and they are advised to carry oxygen cylinders with them. Why mountaineers are advised to carry oxygen cylinder with them? Because at greater altitudes the density of air is less. Density of air is less. Why? Because the air pressure at higher altitudes is less, so volume is more. When volume is more, density of air is less, means density of oxygen is less. Therefore, mountaineers feel problem and they are advised to carry oxygen cylinders with them. समझ में आ गया बेटा ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ? यस सर. वेदांशी, समझ में आया? सर एक बार और रिपीट कर दोगे? अब मैं एक बार हिंदी में अच्छी से बोल देता हूँ आपको. ठीक है, सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसके ऊपर एटमॉस्फेयर की थिकनेस ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है एटमॉस्फेयर की, वर्टिकल डिस्टेंस, इसलिए वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है सी लेवल पे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ रहा है? वॉल्यूम कम होगा एयर का. एयर का वॉल्यूम कम होगा तो एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी. एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. देयरफॉर एट सी लेवल a person can easily breathe in oxygen. You do not find any problem in breathing. ठीक है, but at higher altitudes the temperature is less, pressure is also less because of small column of atmosphere. उसके ऊपर जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी एटमॉस्फेयर की वो कम होगी. ठीक है, इसलिए क्या होगा? वॉल्यूम, since the pressure is less, volume would be large. Volume of air would be large. ज्यादा एरिया में गैस फैली रहेगी, इसलिए density of oxygen would be less. When the density of oxygen would be less, the person will feel breathing problems, and therefore mountaineers are advised to carry oxygen cylinders with them. This is one of the practical importance of Boyle's law.
Okay. In yesterday's class we studied Charles' law, but whatever we studied in Charles' law was in terms of degree Celsius scale. When the temperature is taken in degree Celsius scale. What was the formula for Charles' law? Charles' law states that volume of any gas at temperature T degree Celsius is equal to volume of gas at 0 degree Celsius plus 1 upon 273 times the volume of gas at 0 degree Celsius multiplied by temperature in degree Celsius scale. Actually, small t is temperature in degree Celsius scale. Okay. Small t is the temperature in degree Celsius scale. And the symbol used for representing temperature in Kelvin scale is capital T. Okay. We also studied that at temperature T equal to 273 degrees Celsius, what would be volume of gas? ऐसे निकाले कितना चेंज हो जाएगा? T at 0 degree Celsius plus 1 upon 273 into T at 0 degree Celsius into temperature at 0 degree Celsius. Okay. But if it is T minus 273 degrees Celsius, then what will be change in volume? T 0 degree Celsius plus 1 upon 273 V0 into minus 273 degree Celsius. So minus 273 इसको आप डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? That will give minus 1 and it will become minus V0. So V0 minus V0 equals 0. So at 273 minus 273 degree Celsius temperature, the volume of any gas becomes 0. That means it is impractical to say that a gas exists at minus 273 degrees Celsius. Or we can infer that at temperature minus 273 degrees Celsius, no any gas can exist. Whether it is oxygen gas, carbon dioxide gas, noble gases or any other gases. No any gas can exist in gaseous state at temperature minus 273 degrees Celsius. Actually, it is impractical to maintain a temperature of minus 273 degrees Celsius. So, it is assumed to be a hypothetical temperature. इतना कम temperature हम नहीं ला सकते minus 273 degrees Celsius. So, it is hypothetical in nature, and this temperature minus 273 degrees Celsius is also known as absolute zero. It is known as absolute zero. Why it is called absolute zero? Because at this hypothetical temperature, the volume of any gas becomes zero. Alright? We studied this in the form of a graphical representation also. ठीक है, और ग्राफ से हमने दिखाया था, आपको प्रूव किया था कि किसी भी गैस का वॉल्यूम माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पे 0 हो जाता है. नाउ the graph obtained between volume and temperature at constant pressure would be called as isobar. ठीक है, the graph obtained between volume and temperature at constant pressure, that is volume and temperature. वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार. Why we call it as isobar? Because iso means same and bar is a unit of pressure. When the pressure is kept constant, then the graph plotted between volume of gas and the temperature of gas is known as isobar. In case of Boyle's law, we studied that the graph which is plotted between the volume and temperature at constant pressure is known as
आइसोथर्म, ठीक है। व्हाट इज आइसोथर्म? आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर। Graph which are obtained between volume and temperature at constant pressure at constant temperature are known as volume and pressure at constant temperature are known as isotherms. Now let's try to understand another statement or another way of defining Charles law. We know that temperature can also be expressed in terms of Kelvin temperature. ठीक है। अब केल्विन टेम्परेचर के हिसाब से हम चार्ल्स लॉ को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? From original form of Charles law we know that Vt equals V0 plus V0T upon 273, ठीक है। दिस इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। अब आपको क्या करना है कि इसमें जो ये टेम्परेचर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। कैसे मॉडिफाई करें? दिस कैन आल्सो बी रिटन एज V0 273 plus T upon 270. Then we write this whole equation like this. What is this? क्या हम इसको प्रोडक्ट साइड जो लिखा हुआ है, राइट साइड जो लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं? राज, मेरी आवाज आ रही बेटा क्लियर आपको? देवांशी, Yes, sir. Yes, sir. तो हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं? आप ये देखिए, इसका एलसीएम ले लिया 273, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम हो गया 1 into 273, 273 into V0, 273 V0 प्लस 270 डिवाइड किया, क्या हो गया ये? V0 प्लस V0 into T, यानी V0T, ठीक है। अब इसमें से आप V0 को कॉमन निकाल लीजिए बाहर, इट मींस V0 273 प्लस T upon 270. So Vt can be written as V0 273 plus T upon 273. Can we replace 273 plus T by Kelvin scale? What is Kelvin scale? We know that Kelvin equals temperature in degree Celsius scale plus 273. That is delta T, T plus 273. हम इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं? We can write it as Vt equals T into T upon 270, where FT stands for Kelvin temperature. Okay, that T is temperature for Kelvin temperature. अब इसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं? We know that यहाँ पे जो टेम्परेचर है T 273 माइनस 273 केल्विन टेम्परेचर, 273 केल्विन टेम्परेचर को हम क्या लेते हैं? T नॉट। So we also know that 273 Kelvin equals T नॉट, ठीक है। केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर है 273, उसको हम T नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको T नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन क्या बन जाएगी? Vt इक्वल्स क्या हो जाएगा? V नॉट T अपॉन T नॉट, ठीक है। ये हो गया। इस T को आप इस साइड लेके क्या हो जाएगा? T at T temperature अपॉन कैपिटल T इज V अपॉन T लिख दिया, इक्वल्स V नॉट अपॉन T नॉट। So volume of any gas at 0 Kelvin will be constant. Volume of temperature at T नॉट is constant 273 Kelvin, ठीक है। सर बोर्ड क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। बोर्ड आज बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है, बोर्ड जब ना दिखे बोल देना, थोड़ा वेट कर लेना, थोड़ी देर में दिखने लग जाएगा। अच्छा देखिए कहाँ तक दिख रहा है रुमीसा आपको अभी बोर्ड? सर जितना लिखा है वो थोड़ा ब्लैक हो गया, प्लेस थीटा। थोड़ी देर आ रहा होगा फिर जा रहा होगा, आ रहा होगा जा रहा होगा, ऐसा हो रहा है क्या? ब्लड यस सर। अभी आया क्या? पूरा समझ में आ गया?
डी टी इक्वल्स डी नॉट टी अपॉन टी नॉट। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, आप देखिए इसमें से टी को हम लेफ्ट साइड में ले आए, क्या हो गया? डी टी अपॉन टी इक्वल टी नॉट अपॉन टी नॉट। दिस वैल्यू टी नॉट अपॉन टी नॉट विल बी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट 0 Kelvin will be a fixed quantity. Volume of temperature T naught is always equal to 273. Both are constant values, and the ratio of a constant would also be constant. So we can write it as E upon capital T equals constant. ठीक है, इस कांस्टेंट को हटा दीजिए, क्या बन जाएगा? D is directly proportional to capital T. Therefore, Charles' law can be also stated as the volume of given mass of gas is directly proportional to absolute or Kelvin temperature at constant pressure. You can write down another form of Charles' law, statement of another form of Charles' law. The volume of given mass of a gas, write down. The volume of a given mass of a gas is directly proportional to the Kelvin temperature at constant pressure. Directly proportional to the Kelvin temperature at constant pressure. देखिए बच्चों, यस सर। सर रिपीट कर दीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही। the volume of a given mass of gas, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute or Kelvin temperature at constant pressure. लिख लिया क्या? बोलो। यस सर। Okay. So Yes, now sir. let's represent Charles' law by graphical method. So if we plot a graph between volume of a gas and Kelvin temperature, हमने क्या लिया? वॉल्यूम ऑफ गैस एंड टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। अभी हमने पढ़ा था क्या? वॉल्यूम ऑफ एनी मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमने अभी तक पढ़ा। ठीक, जब हम ग्राफ बनाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। As the temperature increases, volume of gas also increases. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बट टेम्परेचर शुड बी केल्विन स्केल। A graph, straight line graph looking upwards will be obtained. ठीक है, ये देखिए हमने टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम इतना था, और टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, ऑन एक्सट्रापोलेशन दिस ग्राफ passes through origin, that is 0। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं?
this V is directly proportional to T, or we can write V upon T equals constant K at different pressures. At pressure P1, we can write P1 upon T1 equals K. At pressure P2 we can write P2 upon T2 equals K. In both the cases we can see the ratio is constant K. So we can write equation P1 upon P1 equals P2 upon T2, or we can write P1 upon P2 equals P1 upon P2. This is mathematical form of Charles law which is used for solving numericals. जब भी चार्ल्स लॉ में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? V1 upon P1 equals V2 upon P2, or V1 upon P2 equals V1 upon P2. This graph is obtained at constant pressure, therefore it is also known as isobar. समझ में आ गया? बोलो बच्चों। यस सर। बोर्ड दिख रहा है? यस सर, दिखाई यस दे सर। ऑलराइट। Now if we plot volume versus Kelvin temperature graphs at different pressures, we get a number of isobars. एक ग्राफ ऐसे भी हो सकता है कि हमने यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया और यहाँ पे टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। So if we vary the pressure, अगर हम प्रेशर चेंज करें तो हमको ऐसे ग्राफ मिलेंगे अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग वॉल्यूम होगा फॉर इच टेम्परेचर। लेट द प्रेशर इज P1, P2, P3, P4 and P5. Can you arrange these pressures P1, P2, P3 and P5 in increasing order? कौन सा प्रेशर कम होगा, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, increasing order में arrange करेंगे। P1 ज्यादा होगा कि P5? सर P5 will be larger and P1 will be smaller. जैसे देखिए, हमने अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, एक टेम्परेचर इसमें मान लीजिए फिक्स कर लिया, सपोज इट इज P1। P1 टेम्परेचर में देखिए P5 वाले ग्राफ के वॉल्यूम कितना है? V, ठीक है। इस वाले में वॉल्यूम ये, इस वाले में ये वॉल्यूम, इस वाले में ये वॉल्यूम, इस वाले में ये वॉल्यूम, ठीक है। तो टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, और हम जानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ लग जाता है, क्या हो जाता है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब वॉल्यूम किसमें ज्यादा है? वॉल्यूम ज्यादा है P1 के केस में, ये वाला जो आइसोबार है P1 के केस में वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब P1 इज लेस, ठीक है। P1 लेस होगा, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेशर वुड बी P1 is less than P2 is less than P3 is less than P4 is less than P5. ठीक है, this way we can determine the pressure, कौन सा प्रेशर ज्यादा है, कौन सा प्रेशर कम है, by just observing the pressure is isobars. All right. Now next, experimental verification of Ohm's law. How can we verify Ohm's experimental verification of Charles law? Experimentally, इसको हम कैसे कर सकते हैं?
Children, am I audible now? यस सर। पता नहीं क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरा डेस्कटॉप बंद हो गया था। ऐसा भी होता है क्या, ज्यादा लोड बढ़, तुम लोग ज्यादा जानते हो, सर्वर लोड बढ़ा, शॉर्ट सर्किट हुआ, कंप्यूटर बंद हो गया, ऐसा भी होता है क्या, लोड से शॉर्ट सर्किट? तो फिजिक्स वाले सारे स्टूडेंट्स, ऐसी प्रॉब्लम भी आती है क्या? ये कैमरा ऑन करो सब लोग बच्चों, स्विच ऑन योर कैमरा। ऐसा होता है क्या, सर्वर लोड बढ़ने से शॉर्ट सर्किट हो जाए? नहीं है ऐसा चांस। अचानक चलते चलते कंप्यूटर पूरा शटडाउन हो गया, नीचे से सीपीयू वगैरह सब। अगर ये सब प्रॉब्लम एक दो बार और हुई, मैं फिर स्कूल जाने लग जाऊंगा, फिर स्कूल से ही क्लास लेंगे। ठीक है, तो वी आर स्टडीइंग। सर आपकी वीडियो मुझे ही नहीं दिख रही है, किसी को नहीं दिख रही। वीडियो मेरी किसी को नहीं दिख रही, अभी मैं दिखाऊंगा तब दिखेगी। ठीक है, ओके, अब दिख रही है मुझे? सर अभी तो नहीं देखी। हाँ सर अब आई। भाई आगे। तो हमने आपसे क्या बोला था कि इस तरीके से जब हमने डिफरेंट प्रेशर्स के ग्राफ बनाए, वॉल्यूम और केल्विन टेम्परेचर में, ठीक है, P1, P2, P3, P4, तो जो सबसे ऊपर रहेगा प्रेशर, वो प्रेशर की वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, दैट मींस P1 is less than P2 is less than P3 is less than P4. Now, as we are dealing with experimental verification of Charles law, how can we verify Charles law experimentally? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? We can find out the volume of gas at different Kelvin temperatures. टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, और हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, और वॉल्यूम निकालने के बाद लेट अस फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सपोज द at temperature 273 Kelvin, the volume of gas is 775. Then at temperature 293 Kelvin, the volume of gas is 832 decimeter cube. Similarly, at 313, मान लीजिए टेम्परेचर हमने सेट कर दिया 313, and the volume of gas comes to be 859 decimeter cube. अब आप इनका रेशियो निकालो। When you find the ratio V upon T, the value comes to be 2.84, 2.84 and 2.84. So, in this way, if we change the temperature, then the volume of gas also changes. If we find the ratio of volume of gas to the temperature, it comes nearly equal or constant. That means the volume of any gas is directly proportional to temperature. As the temperature is increasing, volume of gas is also increasing. Hence, Charles law is verified. So, in this way, we can verify Charles law. What is practical importance of Charles law? अब जैसे अभी हमने आपको बताया था Boyle's law का practical importance, same we can explain the practical importance of Charles law. This is a hot air balloon. Hot air balloon, ठीक है, ये hot air balloon भी फिल gas at high temperature. ठीक है, अब देखिए समझो आप, when the temperature is large, the volume of gas would be large. ठीक है, when the temperature is large, volume of the gas will be large. When the volume of gas will be large,
number of molecules per unit volume would be less. That means the density of gas will be less. इसकी density क्या हो जाएगी gas? Density will be less. When density will be less, किसके comparison में less? Density becomes less than that of air. When density of gas inside the hot air balloon becomes less than that of air, then the balloon will rise up. और इसी की वजह से जो हॉट एयर बलून है वो ऊपर जाएगा, अपलिफ्ट होगा. क्यों? The density of air inside hot air balloon will become less than the density of air. ठीक है? बाहर जो एयर है, ठीक है, इस एयर की डेंसिटी कैसी है? लार्ज है. ऊपर जो बैलून है उसकी डेंसिटी कम है. डेंसिटी बैलून की कम क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा है. ठीक है? सो ग्रेटर द टेम्परेचर लार्जर विल बी वॉल्यूम. ठीक है? दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा. वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा. दैट मींस डेंसिटी विल डिक्रीज. व्हेन डेंसिटी डिक्रीजेस द balloon will rise up. All right, so this is practical application of Charles law. ठीक है? अब इसके बाद another important law is relationship between pressure and temperature at constant volume. Pressure temperature relationship at constant volume. ये प्रकार की रिलेशनशिप पढ़ी आपने. In case of Boyle's law, you studied volume and pressure relationship at constant temperature. In case of Charles law, you studied volume and temperature relationship at constant pressure. Third relationship between pressure and temperature at constant volume. इसको हम बोलते हैं Boyle's law, इसको चार्ल्स लॉ और इसको गै-लुसाक्स लॉ. गै-लुसाक्स लॉ. So gay-Lussac correlated the pressure exerted by given mass of gas with Kelvin temperature, and he observed that the pressure of given mass of gas held at a constant volume is directly proportional to Kelvin temperature. ठीक है? गै-लुसाक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? लिख लीजिए आप. स्टेटमेंट ऑफ गै-लुसाक्स लॉ: the pressure of given mass of a gas at constant volume is directly proportional to Kelvin temperature. Okay, so mathematically pressure is directly proportional to temperature at constant volume. Okay, it means pressure upon temperature equals constant. यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाया, इक्वल साइन लगाया, कांस्टेंट आ जाएगा. इट मींस P1 upon P1 equals P2 upon P2, or you can write P1 upon P2 equals P1 upon P2. So this mathematical form of gay-Lussac's law is used for solving numericals. All right, बच्चों, आया समझ में ये गै-लुसाक्स लॉ? यस सर. ओके, अब माइक बंद कर लो. लेट्स रिप्रेजेंट गै-लुसाक्स लॉ ग्राफिकली. गै-लुसाक्स लॉ में हम क्या करेंगे? वी कीप प्रेशर एंड टेम्परेचर. टेम्परेचर इन केल्विन स्केल on x-axis and pressure on y-axis.
So as the temperature increases, the pressure of given mass, pressure exerted by the given mass of gas also increases. अब देखिए आप समझ लो पहले, मान लीजिए एक कंटेनर हमने ले लिया, इसमें गिवन मास ऑफ गैस भरी हुई है। अगर आप इसको हीट करोगे क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल्स की हीट एनर्जी बढ़ जाएगी। When the heat content of gaseous molecule will increase, their kinetic energy will increase. They will start moving at faster speed. When they start moving at faster speed, they would exert greater pressure on the walls of the container. Alright. So when we increase the temperature, kinetic energy of gaseous molecules increases. As a result, the pressure exerted by the given mass of gas also increases. That means there is direct relationship between pressure exerted by gas and the temperature. So again, you will get graph like this. When the temperature increases, proportionally pressure exerted by gas also increases. And the graph so obtained is at constant volume. ये तभी संभव है जब गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। इसका मतलब गैस इज केप्ट इन ए क्लोज सिलेंडर और इन ए क्लोज कंटेनर। गैस शुड नॉट बी अलाउड टू एस्केप। अगर गैस क्लोज कंटेनर के अंदर है, ठीक है, तभी टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा। इफ द कंटेनर इज ओपन, व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, सम ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल विल एस्केप आउट। दैट मींस द वॉल्यूम विल इंक्रीज। व्हेन वॉल्यूम विल इंक्रीज, प्रेशर विल बी रिड्यूस्ड। ओके, so here it will be at constant volume. Volume should remain constant. The graph obtained between pressure and Kelvin temperature at constant volume are known as isopores. ठीक है, पहले केस में बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा था, आइसोथर्म at constant temperature. Charles law में isobar, that means at constant pressure. Third, isopores. What are isopores? The graph plotted between pressure and temperature at constant volume. If I say a chemical reaction is carried out in an isoporic process, isoporic process means the volume of the reactant and product should not change. It is carried out in a closed container so that gaseous molecules may not escape out. So isoporic process का मतलब है जिसमें वॉल्यूम चेंज अलाउड नहीं है। Means no any material can come inside or no any material can escape out from the system. ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोपोरिक प्रोसेस। ठीक है चिल्ड्रन, समझ में आया? Now the numericals based on Charles law and Gay-Lussac's law will study in the next class. So you can switch on your camera. चलो चालू हो जाओ। थोड़ा नेटवर्क कंजेशन की वजह से क्लास में आज दिक्कत आई, लेकिन आई होप that you would have understood what is taught in the class today. Is it? समझ में आ गया था? सुधांशु गाना क्यों बजा रहे हो? यस सर। आ गया तो माइक बंद कर लो। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया था? क्लियर? यस सर। ये ऋतु एक ही बार शकल नहीं दिखाई आज। कैमरा कहाँ है तुम्हारा ऋतु? सर वो यूनिफॉर्म नहीं पहनी इसलिए। अरे तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से फेंक के डंडा थोड़ी मारूंगा। ठीक है, कैमरा ऑन करो।
यूनिफॉर्म नहीं पहना, पहनना चाहिए, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, आपको पहनना चाहिए, बट नहीं पहना इसका मतलब ये नहीं कि कैमरा ऑन नहीं करना है, ठीक। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। Now I have